Hello, 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 everyone. Can you see and hear me? Can you see and hear me? All right. Okay. Hi, Alpesh. Hi, Hiban. Hi, Vaishnavi. Hi, Ashu. Hi, Hanaya. Hello, everyone, and good afternoon. I'm so sorry for being late. There were some technical issues, uh, hence the delay. Uh, Apologies for that. Let's get started with the session. तो आज का जो एडिटोरियल है आज हम okay before we get started we are going to be doing the Hindu editorial analysis of the 12th of May brought to you by Unacademy and I will be doing the analysis Vaishnavi Pandey. All right, let's get started with the aaj bahut sare words hain, we have a ton of words again, so let's quickly get started because most of these words are very very important. All right, so before we get started, this is my Telegram channel. If you have not joined my Telegram channel yet, it is high time that you do. My channel name is Unacademy _ Vaishnavi _ CLAT. अगर आप ये टाइप करेंगे Telegram पे तो आपको मिल जाएगा मेरा चैनल. अगर वैसे नहीं मिल रहा है तो please scan the QR code and it will take you straight to my channel. अगर ऐसे भी नहीं मिल रहा है तो simply type Vaishnavi Pandey 31 and you will be able to find my channel. So do join up because all the quiz and timetable मेरा पूरा schedule दिन भर का उसी में post होता है, okay? All right, so let's get started with the vocabulary. आज, like I said, बहुत सारे words हैं. Vaishnavi, I am doing great. How are you doing? How are you doing? Hello, Kirti. Good afternoon. Good afternoon. Let's start with the vocabulary. Let's get started. Okay, let's quickly get started with the vocabulary. Indictment. सबसे पहला word है indictment. बहुत important word है आपके लिए, for all of you all. Uh, they see me rolling. They hate it. Wanna catch me riding, baby. Alpesh, I feel like singing that song every time you say let's roll. Okay. Indictment is a noun which means a formal charge or accusation of a serious crime. कोई भी serious crime का charge जो होता है formal charge मतलब कोर्ट के द्वारा दिया हुआ charge और या accusation of a serious crime या accuse करना of a serious crime is called indictment. Okay, it is noun. Moving on to the next word, again important for all of you all, litigation. Litigation is also a noun which means the process of taking legal action. Any legal action that anyone takes is called litigation. Okay, again a noun. So indictment, बहुत important word. Litigation, another important word. Underscore हमने पहले कर लिया है. We have done this word before. Underscore का मतलब होता है basically emphasize करना. ठीक है, कोई चीज पे जोर डालना या emphasize करना is underscore something. Okay, so या तो अंडरलाइन आप कह सकते हो या तो अगर हम यहाँ पर सिचुएशनल देखें तो सिचुएशनल हमेशा एम्फसाइज करने के लिए यूज करते हैं हम अंडरस्कोर. Imbroglio. Okay, sorry. Im Imbroglio. Okay, it is imbroglio. G pronounced nahi hota imbroglio. Is an extremely confused or complicated or embarrassing situation. तो या तो बहुत confusing situation या तो extremely
कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, बहुत ही उलझा हुआ, वेर यू आर नॉट एबल टू हैव क्लैरिटी ऑफ एनी सॉर्ट, ठीक है, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो आप एक्सट्रीमली कंफ्यूज हो, इम्ब्रोलियो, ओके, इम्ब्रोलियो, जिसमें जी इज साइलेंट, ओके, वी डू नॉट pronounce the G. So imbroglio is a noun जिसका मतलब होता है an extremely confused, complicated or embarrassing situation, ठीक है. Moving on to the next word, regime. Regime is a noun. इस word को भी हमने पहले कर लिया है. We have already done this word. Okay, so a government, especially an authoritarian one is called a regime. So basically, any sort of government is called a regime. पर्टिकुलरली ऐसे टाइप के गवर्नमेंट को, अथॉरिटेरियन टाइप के गवर्नमेंट को बोलते हैं regime, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हैज टू बी अथॉरिटेरियन, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, स्टेटस को भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. स्टेटस को इज समथिंग दैट यू विल सी इन अ majority ऑफ, आजकल बहुत ज्यादा यूज में है, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, एंड दिस इज अ फॉरेन वर्ड जिसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स. रिमेंबर दैट द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स बेसिकली अभी जो सिचुएशन है, अभी जो हालात है, उसके बारे में बात करना इज द स्टेटस को. ओके, सो स्टेटस को अभी के सिचुएशन के बारे में बताना या बात करना is it can be any sort of अभी का situation, it can be the political situation या social issue हो सकता है, तो उस चीज में status quo क्या है. And even in management it is used, right, existing state of a certain company, organization. Okay, so that is status quo, अभी का situation सोशल या पॉलिटिकल इश्यूज पे स्पेशली. ओके, सो स्पेशली पॉलिटिकल या सोशल इश्यूज पे अभी क्या सिचुएशन है, दैट इज स्टेटस को. All right, so only Alpesh and Vaishnavi are making sentences. What happened to the rest of you? You just wish me good morning and that's it. Your time is done. You're just going to sit back and relax. Nobody is going to do that. Okay, you are supposed to make at least one sentence per word. Per word, one sentence is what I need. Okay. Then is nevertheless. Nevertheless is something that is nevertheless का एक कंजंक्शन है, ठीक है, और ये मैंने ये वर्ड इसलिए इंक्लूड किया. आई नो दिस इज नॉट समथिंग दैट लॉट ऑफ पीपल वुडंट नो. ऐसा नहीं है कि बहुत लोग नहीं जानते होंगे नेवरदलेस का मतलब, लेकिन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि ये एक की वर्ड है. ओके, नेवरदलेस का मतलब होता है in spite of something. Okay, in spite of something. Nonetheless is also the same thing. Okay, nonetheless and nevertheless are similar. Okay, so you can use like although and though, although and though, in the same way they both are similar. All right, so it is in spite of that. Okay, notwithstanding. Notwithstanding is another word for it. All the same. Okay, so इनमें से कुछ भी हो सकता है. आप nevertheless use कर सकते in spite of that. Okay, so I told her not to go. Nevertheless, she went. Okay, so in spite of that, she went. Okay, notwithstanding, um, notwithstanding, you can say in the sense that um, in the same sentence you can use it for notwithstanding. Okay, notwithstanding my command, so nevertheless I asked her to stay back, so stay put, she still left. Okay, so instead of nevertheless you can use over here notwithstanding my command, she still left. All the same, again,
whatever the situation is, nevertheless I agree. Okay, so nevertheless I agree मतलब कोई भी situation, सारे situation same है, I will still agree. Okay, so nevertheless has these three meanings. Okay, so in spite of that, notwithstanding, all the same is nevertheless. Extraneous is an adjective है जिसका मतलब होता है irrelevant और unrelated to the subject being dealt with. तो extraneous is ऐसा चीज जो किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है उससे रिलेटेड नहीं है, उसके लिए रेलेवेंट नहीं है, उसका उससे कोई ताल्लुकात नहीं है. ओके, दैट इज एक्सट्रेनियस. ओके, तो unimportant factors या unrelated factors are all extraneous factors. Okay, quash भी हमने पहले कर लिया है, बहुत बारी किया है. quash का मतलब reject as invalid. Basically quash करना is to just say खत्म हो, आप सही नहीं हो. Okay, so reject as invalid especially by legal procedure. Legal procedure से अगर किया जाता है तब specially it is called quash. Okay, अगर आप किसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर, अगेन रिमेंबर दैट स्पेशली का मतलब नहीं होता है ऑल द टाइम. ठीक है, स्पेशली मतलब पर्टिकुलरली इन सिनेरियोज में ज्यादा यूजेज इसका देखा जाता है, लीगल प्रोसीजर में इसका यूजेज ज्यादा देखा जाता है. राइट, दैट इज कोश. देन वी हैव वॉलंटरी अगर कोई काम कर रहे हैं तो डन और गिवन ऑन और एक्टिंग ऑफ वंस ओन फ्री विल, आप खुद से, ये भी हमने पहले कर लिया है. राइट, सो वॉलंटरी एक्शंस आर एक्शंस जो आपको किसी ने फोर्स नहीं किया करने के लिए, आप खुद से अपनी अपनी उत्सुकता से या अपने मन से यू हैव डन समथिंग, यू आर गोइंग टू डू समथिंग, या यू आर डूइंग समथिंग. ठीक है, अगर आप कुछ कोई एक्ट कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो आप खुद से अपने मन से कर रहे हैं, तो दैट इज वॉलंटरी एक्शन. ओके, सो दिस इज एन एडजेक्टिव, इसीलिए मैं हर बार वॉलंटरी एक्शन बोल रही हूँ, बिकॉज नाउन इज द एक्शन एंड वॉलंटरी इज द एडजेक्टिव. देन यू हैव इंटरिम. इंटरिंग भी हमने पहले कर लिया है. ओके, दिस इज अनदर वर्ड दैट वी हैव ऑलरेडी डन, जिसका मतलब होता है द इंटरवीनिंग टाइम. ऐसा टाइम जो इंटरवल वाला टाइम होता है जहां आप ये कर सकते हो, आप इंटरफियर कर सकते हो. ओके, आप इंटरवीन कर सकते हो, आप बोल सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है उस टाइम पे. दैट इज इंटरिम. डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन इज द एक्ट ऑफ लीविंग अ कंट्री, पॉलिटिकल पार्टी, या तो कंट्री या तो पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई छोड़ता है. ओके, टू गो टू अनदर वन. टू गो टू अनदर वन मतलब डिफेक्शन ऐसा केस है जिसमें कोई भी इंसान अपने या तो अपने कंट्री को या एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव डन. डिफेक्शन भी हमने पहले किया है. ओके, सो अपने पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है या दूसरा कंट्री का परमानेंट रेसिडेंट बन जाता है, दैट इज डिफेक्शन. सो द पर्सन हु इज डूइंग इट विल बी कॉल्ड डिफेक्टर. ठीक है, जो कर रहा है ये काम उसको हम क्या कहेंगे? डिफेक्टर कहेंगे. ओके, so defector and defection. Okay, so defector is the person who is doing it. Okay, both are noun. A defector is used for the person who is doing the act of leaving his country or the political party to join another political party or country. So the action of doing it is called defection, the person who is doing it is called the defector. Okay, so both are noun and both are used in the editorial. All right, so the words that we did over here are indictment, litigation, underscore, imbroglio, regime, status quo, nevertheless, extraneous, quash, voluntary, interim, defection. All right, so let's look at the sentence time. All right, sentences. Alpesh, I can only see Alpesh's sentences all over the chat box. The rest of you buckle up. I don't want only to be reading Alpesh's sentence. Where is Nishita today? Nishita is not here today. And the rest of you जो नए join किए हैं, please just don't sit back and listen, participate. Okay.
Uh, he had to face indictment when he used unreliable sources for his speech. Very nice, Alpesh. Good job. Uh, Bonvita company had to face litigation as a consumer sued them for fraudulent promotion. The same sentence can be used for Bonvita company wala sentence can be also used for indictment, and would be better suited for indictment. Alpesh, very good job, but Vaishnavi, a boy had indictment for murder by court. Okay, a boy was indicted. Okay, indicted हो जाता है. Okay, verb form में आप use कर रहे हैं तो indicted हो जाता है. Okay, indicted. A boy was indicted for murder by the court. Okay, he specially very nice Vaishnavi. He specially underscored me in the function as it was my birthday. Very nice, Alpesh. Good job. I found myself in imbroglio when teacher caught me jumping on bench. Very nice. Good job, Alpesh. Uh, the PM underscored on country's economy, on country's good economic situation or bad economic situation. Okay, underscore is highlighted. Country का economy के बारे में highlight क्या किया? Okay, what did he highlight? That was it in a good state or a bad state? तो थोड़ा सा रह गया Vaishnavi, but the sentence is absolutely fine. The regime had to surrender as its army protested against it. Very nice, Alpesh. Good job. Also, the Pak regime is totally opposing the Supreme Court about this, about same. Absolutely, and I saw the other editorial as well. Though status quo is the litigation procedure has been referred back to Islamabad High Court. Very nice, Hanaya. Good job. Very cleverly put status quo in the picture. Nice. Chandan, as a Supreme Court of oh, sorry, what am I reading? As an SP होगा Chandan, as an SP, because abbreviation जो ऐसे abbreviation होते हैं जिसमें vowel sound होता है, ऐसे abbreviation या acronyms जिसमें vowel sound होता है, S में how do you pronounce it? S, राइट? तो इसका साउंड क्या आ रहा है? वाल साउंड आ रहा है, तो इसीलिए एन एसपी होगा. एन एफबीआई एजेंट होता है, एन एफबीआई एजेंट, एन एमबीए स्टूडेंट. Okay, an x-ray machine. All right. As an SP of the district, I have taken litigation against a suspect of theft. Where is Triranga nowadays? Ishant is also not there. Triranga is also not there. Nishita is also not there. What is happening, Alpesh? Where are they all going now? Tell me. Okay, so I have taken I have taken litigation against a suspect of theft. Very nice, Chandan. Good job. Only the article change. Nevertheless, the PTI supporters are celebrating SC order. Very nice, very nice. Hanaya, good job. The journalist's job is to provide status quo on on central activities too, not just praising it. Very nice, Alpesh. Good job. The journalist's job. Journalist's job. Um, a journalist, if you make it a journalist's job, an apostrophe s, okay, a journalist's job is to provide status quo on central activities too, not just praising it. Very nice, Alpesh. Good job. If anybody do crime, does not we don't do a crime, commit a crime. Okay, commit a crime.
All right. Um, Next is, oh, sorry about that. This is the spelling of commit. Commit a crime, okay? So, if anybody commits a crime, then it is important taking litigation against him or her. Then it is important to take litigation actions against her, him or her, okay? Vaishnavi, the army has, okay, Hivan has made the sentence. Vaishnavi, good job. The army has issued a status quo on uniform of low-ranking officers. Very nice, Hivan, good job. Government prohibited citizens to participate in the protest. Nevertheless, people joined it. Very nice, Alpesh. Good job. Also, it's being said that the Pakistan Rangers action of arresting ex-PM was extraneous. Very nice, Anaya. Good job. Uh, so she's giving us the other editorials information as well via her sentences. Fantastic, genius, Hanaya. When someone does not have Alpesh, when someone does not have any argument left, he just raises his voice or says something extraneous. Very nice, Alpesh. Absolutely correct. And good application of the word extraneous. Raz, hello. The Kerala government quashed the Kerala story movie. Very nice, Raz. Good job. Peter is facing an imbroglio because of their dumb actions. Very nice, Ishant. Good job. Um, the court has quashed the demand of interim bail petition filed by the accused. Very nice, Hanaya. Defection is illegal in India. Very nice. Wow, today is going like killer. You guys are slaying it, everyone. um, Vaishnavi, my brother always eat my chocolates voluntarily. My brother always eats my chocolates voluntarily. Very nice, Vaishnavi. Court granted interim to the prosecutor on appropriate grounds. Very nice, Alpesh. Good job. His conviction for murder was quashed in the court of appeal. Very nice. Good job, Hivan. Deadpool, yay! Deadpool looks cool when he speaks in an extraneous manner. Very nice, Ishant. Good job. And it only looks cool on him. Alpesh, a defection of Eknath Shinde with several other members from Shiv Sena started drama all over Maharashtra. Very nice, Alpesh. Good job. Brilliant. Did I? Okay. If I have missed your statement, you can post the sentence again. That would be really nice of you. अगर मैंने miss कर दिया है तो फिर से post कर देना. I know, Alpesh. Ashu, the court quashed the verdict due to insufficient evidence, bringing an end to the lengthy legal battle and providing relief to the defendant. Very nice, Ashu. Very nice. Good job. My friend killed her brother voluntarily because he quashed her demand. Great sentence. Kritika. Good job. Oh, sorry, Kritika, I'm saying Kirti. Good job. My bad. I do that, but don't take it personally. Uh, Chandan, due to Peter's action, he had to face indictment and then he started to uh, feel imbroglio. Then he started to feel the imbroglio. Okay, feel the imbroglio. Vaishnavi, good job. Chandan, Vaishnavi, the movie Against Country quashed by CJI. The movie that was against um, the country was quashed by CJI. Very nice. Okay. Nishita has her exam coming soon, CUT. She will
Be consistent soon after. All right. Got it, Alpesh. When I eat in front of relatives, it's imbroglio for my parents. All right, Vaishnavi, good job. Chandan, the venerable judge, very nice, has quashed the argument by his voluntary, by his what? That has to, the word has to be changed over there. Kirti, the status quo of the country is beyond my understanding because sometimes it seems to me very extraneous. Very nice, Kirti. Good job. We are all in the same boat. In logical reason question, there are some extraneous options. Yes, absolutely correct, Vaishnavi. Good job. Not studying hard is the same as an indictment. Very nice, Ishant. Good job. Thanks. Lucky, she does a lot of voluntary work. Very nice, Lucky. Simple and sweet. Hanaya, did I miss it again? Can you post the sentence once again? Our tax regime is a fair one. Very nice, Lucky. Good job. Good job, everyone. Moving on to the next set. We again have a lot of next set. Okay. So dissident. Next word is dissident. जल्दी जल्दी करते हैं इसका meaning खत्म. उसके बाद फिर you start making statements. Okay. Just make one statement at a time because we have a lot of words. Okay. Just make one statement with one word. Okay. And Anaya, can you please post those statements again so that I can read it this time? Uh, dissident is in opposition to official policy. Okay, कोई भी official policy जो है उसके against जाना, उसके opposition में जाना is dissident. Okay, so dissident, dissident undertaking या dissident work done by a certain person. Okay, so adjective is because it is an adjective, तो इसके लिए एक noun आना चाहिए. Maneuver is noun, जिसका मतलब होता है a movement or a series of moves requiring skill and care. So maneuver through something is to move skillfully through something. तो ये verb भी हो सकता है. I was maneuvering through the woods when I was blindfolded. Okay, I tried to maneuver through the woods when I was blindfolded. Okay, so that means कि आप क्या करने यहाँ पर action की तरह use कर रहे हैं, maneuver through the woods. Okay, skillfully I tried to find my way through the woods. Okay, through the forest or through the woods. So in that case it is a verb, but maneuver is a noun over here जिसका मतलब होता है a movement or a series of moves requiring skill and care. Okay, so या तो आप एक मूवमेंट कर रहे हो या तो बहुत सारे मूव्स कर रहे हो जिसमें बहुत स्किल और केयर की जरूरत है. ओके, सो दैट इज टू मनूवर. टॉपल समथिंग इज किसी चीज को गिरा देना. ओके, ओवर बैलेंस और कॉज टू ओवर बैलेंस एंड फॉल. ओके, सो बेसिकली टॉपल समथिंग, टॉपल समथिंग टॉपल्स, दैट मीन्स कुछ बाहर से एक साइड ज्यादा वेट हो गया इसकी वजह से गिर गया. ओके, सो दैट इज टॉपल. ओके, सो बॉटल्स टॉपल फ्रॉम द टेबल. ओके, बॉटल्स टॉपल्ड फ्रॉम द टेबल. ओके, सो टॉपल इन द सेंस यहाँ पर सिचुएशन किस लिए यूज हुआ है? पॉलिटिकल पार्टीज टॉपलिंग. ओके, तो टॉपलिंग बिकॉज इट इज अ वर्ब, हम आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पर. सो इस एडिटोरियल में टॉपलिंग यूज हुआ है. दैट मीन्स द फॉलिंग ऑफ अ सर्टेन पार्टी. ठीक है, किसी पार्टी का गिर जाना. ओके, verdict. Verdict हमने did we do it once already? No. Okay, verdict is again an important word for all of you. Verdict का मतलब एक decision होता है कोई भी issue में, issue पे सिविल या क्रिमिनल केस और एन इंक्वेस्ट के ऊपर जो सुनवाई होती है उसको कहते हैं वर्डिक्ट. ओके, द जो डिसीजन बनता है, जो फाइनल डिसीजन बनता है किसी भी सिविल या क्रिमिनल केस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड अ वर्डिक्ट. ओके, फैक्शन क्या होता है? फैक्शन इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव डन. ओके,
Faction is also something that we have done, a small organized dissenting group within a larger one, especially in politics. So एक कोई small organized dissenting group within a larger one. Okay, so a faction of something is basically smaller group of a larger group. ठीक है, किसी चीज का subset is a faction. Okay, so uh, a faction of something. Okay, this is a faction. All right, of something, especially in politics. तो politics में specially use होता है, particularly use होता है faction. Time is of the essence. Okay, जब हम बोलते हैं time is of the essence, it is an idiomatic expression. ये तब बोला जाता है जब आप किसी को encourage करना चाहते हैं to hurry. Okay, जल्दी करने के लिए आप encourage करना चाहते हैं कि नहीं नहीं भाई जल्दी करो. Okay, so ऐसे इसलिए मोटिवेट करने के लिए आप बोलते हो टाइम इज ऑफ द एसेंस. ओके, हरी अप, टाइम इज ऑफ द एसेंस. ओके, मतलब टाइम बहुत वैल्यूबल है. ओके, सो डू इट नाउ. ओके, सो टाइम इज ऑफ द एसेंस. नेक्स्ट इज हैविंग अ बेयरिंग ऑन समथिंग. ओके, हैविंग अ बेयरिंग ऑन समथिंग एक फ्रेजल वर्ब है, सॉरी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन समथिंग और अ रिलेशनशिप टू समथिंग. ठीक है, किसी चीज पे बेयरिंग होना मतलब उसके ऊपर उसका प्रभाव होना. ओके, किसी चीज का किसी चीज के ऊपर प्रभाव होना. या तो हम कह सकते हैं रिलेशनशिप टू समथिंग, कैसे उसका रिलेशनशिप है दूसरे चीजों के साथ, तो उसको भी कह सकते हैं हैव अ बेयरिंग ऑन समथिंग. ओके, सो शी हैज अ बेयरिंग ऑन her son. Okay, she has a bearing on her son and he will definitely listen to her. Okay, so to have an influence on her son, so the son will definitely listen to her. Okay, adjudicate भी हमने बहुत बारी किया है. adjudicate पहले कर लिया है. it is a verb जिसका मतलब होता है make a formal judgment on a disputed matter. किसी भी disputed matter पे एक formal judgment सुनाना is adjudicate. Okay, इनकर करना मतलब इनकर्ड यहाँ पर यूज हुआ है. इनकर एंड इनकर्ड, जब ईडी लगता है तो डबल आर हो जाता है इन दैट केस. सो वर्ब है विच मीन्स टू बिकम सब्जेक्ट टू एज अ रिजल्ट ऑफ वंस ओन बिहेवियर और एक्शन. ओके, सो कोई भी चीज कि कोई भी चीज का इफेक्ट किसी चीज पे. ओके, किसी चीज पे पड़ जाना. ओके, सो इज इनकर. ओके, व्हाई? बिकॉज अपने ही एक्शन की वजह से जो आपको रिजल्ट मिल रहा है. ओके, जो कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं बेस्ड ऑन anyone's action, उनका उसका जो रिजल्ट हो रहा है उसको कहते हैं incur. Okay, so you have incurred such and such things in your life. Okay, because of your own misdoings. Okay, so something unwelcome या unpleasant, ऐसी चीज का सब्जेक्ट बन जाना. ओके, टॉपिक बन जाना, सब्जेक्ट बन जाना. क्यों? क्योंकि उन्होंने ही ऐसा कुछ किया था. ओके, नेक्स्ट इज फ्रिवलिस. फ्रिवलिस भी हमने किया है पहले. फ्रिवलिस का मतलब होता है कि नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस और वैल्यू. कोई भी चीज फ्रिवलिस होता है, ट्रिवियल होता है, तो उसका मतलब उसका कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है उतना खास. ओके, दैट इज ट्रिवियल. ओ, ट्रिवियल. ऑलराइट, ward off is a phrasal verb जिसका मतलब होता है to prevent someone or something unpleasant from harming or coming close to you. Okay, so to prevent someone or something unpleasant from harming or coming close to you is to ward off something. Okay, so uh, you have to ward off the danger before it reaches you. Okay, you have to ward it off. Okay, तो आप किसी चीज को पहले ही से भगा दे रहे हो या प्रिकॉशन ले रहे हो ताकि वो नहीं आए आपकी तरफ या आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में. ओके, दैट इज टू ward off. So the words that we did over here: dissident, maneuver, topple, verdict, faction, time is of the essence, having a bearing on something, adjudicate, incur, frivolous, ward off. Okay, is a phrasal verb. All right, let's look at the statements.
Ma'am, I have to go to college from Monday. I won't be able to attend your classes. Oh, that's unfortunate, Raj. Do attend the recorded sessions though. You can view it later as well. So it would be unfortunate, but I understand. Ashu, in programming, the underscore symbol is often used to represent a space or to separate words in variable names. Ashu, chat GPT का ये आंसर है एंड अंडरस्कोर वी आर यूजिंग इट सिचुएशनल है ना सिचुएशन के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर है ना तो अंडरस्कोर ट्राई मेकिंग स्टेटमेंट्स विच वेयर जहां पर हम अंडरस्कोर का मीनिंग एम्फसाइज ले रहे हैं although this statement is absolutely correct. We should maneuver through our way to CLAT. Very nice. We should maneuver our way to CLAT. Okay. Raz, I don't like such frivolous behavior. Very nice, Lucky. Good job. Kirti, my habit of doing multitasking makes me topple with daily goals. Very nice. Makes me topple with my daily goals. Very nice, Kirti. Akarshan, the hope was to reignite the engine, and then test a few of the maneuvers that will eventually be required to fly it back to its pad. Wow, amazing. Very nice, Akarshan. Good job. Vaishnavi, when I take more things in my hand, then I and all things topple. Okay, okay. When I have excess load in my hand, I topple. Okay, Vaishnavi, good job. Ishant, Wanda, yay! Wanda has killed all the Avengers in resistance of her humanitarian beliefs, making her a dissident. Very nice, Ishant. Good job. Good job. Uh, Whereas we should study hard as time is of the essence. Very nice. Good job. Simple and sweet. People have the right to dissent in a maneuvering way. People have the right to dissent in a dissident है यहाँ पर in a हाँ so I think you wanted to say dissident. People have the right to dissident maneuvers. Okay, people have the right to dissident maneuvers. Okay, because adjective hai, maneuver becomes the noun over here. All right, Hanaya, good job though. Kirti, my sister always used to tell me time is of the essence when I got late for school. Very nice, Kirti. Good job. Vaishnavi ma'am has a bearing on us. Okay, has not have has a bearing on us. Good job, Raz. Good job. Hanaya, I got injured due to toppling during a trek. Very nice. You can use it this way as well. I got injured as I during my toppled down during my trek. Okay, toppled down during my trek. The verdict was passed in government's favor. Maharashtra government's favor by the Supreme Court yesterday. Very nice, Anaya. Good job. Verdict. Pe. Read the sentence this time. Andrew Tate was incurred for his own action. Andrew Tate incurred the consequence of his own actions. Okay. Raj, my mother always reminds me about time is of the essence. My mother always reminds me that time is of the essence. Very nice, Anaya. Your love incurs an unwavering devotion within me. Wah, 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 wah. Yashu, good job. I have a bearing on everything but nothing at home. Very nice, Hanaya. Good job. Maneuvering is an art, as an art, okay? In art, is essential to become an animator. Very nice, Ishan. Good job. I never used to have a frivolous goal of life before knowing about. Okay, so remember यहाँ पर आपने एक काम कर दिया है which is थोड़ा सा
Galat Kirti, you have taken the meaning of frivolous without the not, okay? Not having any serious purpose or value. तो not is important, मतलब इसका कोई serious purpose और value नहीं होता है, okay? So you are calling, you are saying कि क्लैट के पहले आपका कोई ऐसा फालतू सा पर्पस नहीं था. क्लैट gave you a फालतू purpose. That's what it means, okay? Kirti, but good sentence though. Okay, I appreciate the sentence. Uh, the questions were hardly frivolous, but they were not so easy either. Very nice one. Good job. Naya, the judge adjudicated on the trivial matters really well. Very nice, Naya. If this sounds a bit frivolous, if this sounds a frivolous way to remember a great man, I do not think he would have objected. Um, Even if this sounds a bit frivolous, a bit of a frivolous way to remember a great man, I do not think he would have objected. Okay, so that would be the correct sentence. Akarshan, I get disappointed upon incurring behavior of strangers as well. I get disappointed when strangers incur bad behavior. Okay, strangers incur bad behavior. Uh, my dear ones have a bearing on my life. Very nice, Kirti. Good job. Me being at home all day is totally frivolous. Very nice, Hanaya. Good job. If the council loses the appeal, it will incur all the legal costs. Very nice one. So generally हम cost के लिए हम generally use करते हैं the word incur. Okay, so such and such costs were incurred. Cost was incurred. Uh, i- incurred during the month of this. Okay, during the month of July or during the month of February, March, whatever. Okay. Kirti, don't be sorry. Don't ever be sorry for the mistake. It was just, but the sentence was absolutely fine. Even if you understood the word wrong, the sentence was fine. Don't say sorry. I wish I could ward off a lot of people in my life. Very nice, Anaya. Good job. Ward off. The judge will adjudicate the dispute between the two parties. Very nice. I frivolously roast my friend. Very nice, Vaishnavi. You used the adverb for. Is my toppled sentence correct? Toppled sentence. Okay. Is my toppled sentence because you are saying gira hua sentence. Okay. So, Ishant, which sentence are you talking about? Which sentence of yours is gira hua? Batao. All right. Moving on to one important thing before we move on to the editorial, and the important announcement is what is a flow test. Okay, इस editorial में लिखा हुआ है, दो बारी बताया गया है flow test के बारे में कि Mr. Thackeray ne refused कर दिया flow test. The court had ordered a flow test and he refused the flow test. So what is a flow test? Is basically is a is primarily taken to know whether the executive enjoys the confidence of the legislature. उनका party का strength दिखाना होता है कि if they are adequate enough to be the ruling party. Okay, it is a constitution mechanism under which a chief minister को क्या जो गवर्नर अपॉइंटेड होते हैं उनको क्या करना होता है, दे हैव टू प्रूव कि उनके पास मेजोरिटी है ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ फ्लोर टेस्ट. ओके, is this clear to everyone? Can we move on to the important announcements? Edge closer to acing your exam preparation. Ta-da! This offer is only valid till May 13th, so make sure that if you are going to subscribe to your to Plus batch or any or iconic batch, do it today or tomorrow, by tomorrow, because offer is only valid till tomorrow. Okay, so 6 months plus 1 month extension मिल रहा है free आपको. अगर आप ये लेते हैं और discounted price आपका 11,843 बच रहा है. Right, so so
Make sure that you are taking this offer and you're using my code. My code यहाँ पर दिया हुआ है Vaishnavi 10. Do use my code. अब क्लैट प्रिंटेड मॉक टेस्ट आने वाले हैं जिसमें 10 सेक्शनल मॉक टेस्ट होगा, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, एंड दिस विल बी डिलीवर्ड राइट एट योर doorstep, available with all iconic and 9 month and above plus subscribers. Okay, so this is coming soon, watch out for it. June 2023 में आ रहा है आपका क्लैट प्रिंटेड मॉक्स. All right, CLAT, SLAT के लिए 12 comprehensive sectional test and 2 full length mock tests available है at a discounted price of 665, and you can use my codes to avail this offer. ये है हमारा May month का calendar. Please make sure that you are giving all the mock tests, because you are supposed to ideally give one mock per week. One mock per week. All right, so make sure that you are giving all the mocks. And अगर अभी तक आपने प्लस नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लस सब्सक्राइब करके मॉक्स दे सारे के सारे. All right. द वॉरियर्स एक ऐसा बैच है जो क्लैट 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए है. इसमें अगर आप वैष्णवी 10 यूज करेंगे तो आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा इस पे. ओके, सो आई विल बी टेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, सो हरी अप एंड इनरोल. Crack CUET PG Law DULLB in 30 days is an intensive course for DULLB. April 27 से start हुआ है, so enroll now. All right, let's take out our highlighters and start with the editorial. आज का editorial में tough words हैं and थोड़ा सा different है आज का editorial. Okay, the structuring is a little bit different. ठीक है, तो हम start करते हैं. Morality, majority. Okay, morality and majority. Okay, so this is going to be this is the topic. Supreme Court verdict is an indictment of how regime changed in Maharashtra. Okay, so this becomes the conclusion कि इसका जो verdict है Supreme Court का, उससे पता चलता है कि कैसे it is an indictment of how regime changed in Maharashtra. ये एक ऐसा indictment है जिससे एक कहानी बनती है कि कैसे महाराष्ट्र का regime change हो गया. Okay, this is the conclusion. This becomes our conclusion, and let's start with the main idea. What is the main idea of today? It often happens in litigation around political development that judgment underscores high principles but extended no relief to those impacted by breach of constitutional norms. तो एक जनरल स्टेटमेंट आपको दे दिया है यहाँ पर. जनरल स्टेटमेंट क्या है कि ऐसा होता है, बहुत बारी होता है कि अगर लिटिगेशन मैटर्स है पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जजमेंट जो होता है वो हाईलाइट होता है किस चीज से, दैट इज हाईलाइटेड, जो जजमेंट पास करता है इन दीज लिटिगेशन मैटर में, उनका जजमेंट जो होता है वो दिखाता है, शो डिस्प्ले करता है हाई प्रिंसिपल्स. ओके, बहुत मॉरल जजमेंट दिखाता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है, उससे कोई राहत नहीं मिलती है जिन पे ये इम्पैक्ट पड़ा है इस जजमेंट का. ठीक है, उनको कोई राहत नहीं मिलती है, इम्पैक्टेड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स. ओके, नो रिलीफ टू दोज इम्पैक्टेड बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स. उनको कोई जो जिनके साथ ब्रीच हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के साथ, उनको कोई रिलीफ नहीं मिलती है इस केस में. ओके, सो दिस इज द जनरल आइडिया. दिस इज द जनरल आइडिया. अब ऑथर बताएगा कि ये किस इंस्टेंस को लेके बोल रहा है. ओके, सो दिस इज द क्लेम और द मेन आइडिया ऑफ द इंटायर एडिटोरियल. और उसके बाद अब सपोर्टिंग एविडेंस देगा आपको. देखो कैसे एविडेंस देता आपको. द सुप्रीम कोर्ट verdict on political imbroglio in Maharashtra last year is one such. Okay, so इसी का देखो एक एग्जाम्पल के सहारे आपको बता रहा है कि ये एक एग्जाम्पल है इस चीज का. ओके, इस चीज का एक एग्जाम्पल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, ये जो पॉलिटिकल इम्ब्रोलियो हो गया था, पूरा कंफ्यूजन मच गया था महाराष्ट्र में लास्ट ईयर, इस केस के बारे में बात करने वाला है ऑथर, और यही है supporting details. Okay, it is an indictment of the manner in which regime change was achieved, but it does not alter the status quo. Okay, so देखो सेम चीज, यही वाला जो फॉर्मेट है, मेन आइडिया का जो फॉर्मेट है, उसी में ऑथर ने ये एग्जाम्पल को पुट कर दिया. ओके, कि ये एक ऐसा मैटर है इंडाइटमेंट का जिसमें रेजीम चेंज हो गया, लेकिन
Okay, Hanaya, I will take a look at it. Okay. A change was achieved, but it does not alter the status quo. लेकिन status में कोई change नहीं आया. Okay. उसके current status में, political status में महाराष्ट्र के कोई change नहीं आया. तो regime change हो गया, लेकिन status में कोई change नहीं आया. Okay. So condition impacted breach वाला is the status quo, and judgment underscores high principle is the change of regime over here. Okay. A constitutional bench has ruled that Governor Bhagat Singh Koshyari, okay, good job, Ashu, you're participating. Bhagat Singh Koshyari had no objective material to doubt the majority of the chief minister Uddhav Thackeray, but had nevertheless asked him to take a flow test based on extraneous factors. Okay. Based on extraneous factors. Okay. So क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उन्होंने क्या किया, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारिया ने को कहा कि ये रूलिंग दी कि भगत सिंह कोश्यारिया के पास जो गवर्नर हैं, वो उन्होंने कहा कि आपने जो ये डाउट व्यक्त किया है चीफ मिनिस्टर पे. ओके. आपने जो ये डाउट व्यक्त किया है चीफ मिनिस्टर पे, उसका कोई बेसिस नहीं है. लेकिन फिर भी उनको फ्लो टेस्ट करने बोला. ठीक है. फ्लो टेस्ट करने का आदेश दे दिया गया उन्हें. ठीक है. बेस्ड ऑन कोई फैक्टर नहीं था, कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं था, एक्सट्रेनियस अननेसेसरी फैक्टर्स थे. ठीक है. As Mr. Thackeray had resigned without facing the floor test, the court said it was unable to restore his government. Okay, तो Mr. Thackeray ने क्या किया, फ्लोर टेस्ट देने से मना कर दिया और उन्होंने बोला कि इंस्टेड आई विल रिजाइन. ठीक है. अब कोर्ट ने फिर उसके बाद क्या ऑर्डर दिया कि अब तो वो गवर्नमेंट को रिस्टोर नहीं कर सकती है. ओके. उन्होंने रिजाइन तो कर दिया, तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को रिस्टोर नहीं कर सकती है. इट इज ट्रू दैट इट cannot quash a voluntary resignation, but the court fails to acknowledge that his resignation was forced by circumstances to which the court itself was a party. Okay. तो basically यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आ गया है. यहाँ पर एक इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके. अगेन द ऑथर इज गिविंग अ जनरल स्टेटमेंट कि इस केस में अपना ओपिनियन दे रहा ऑथर कि इट इज ट्रू, ये सही है कि दैट इट कैनॉट क्वॉश अ वॉलंटरी रेजिग्नेशन. ये सही है कि उनका डिनाई नहीं कर सकते वॉलंट, अगर उन्होंने खुद से आके रेजिग्नेशन दिया है तो उसको अमान्य नहीं कर सकते हैं. राइट. लेकिन कोर्ट फेल्स टू एक्नॉलेज, लेकिन कोर्ट ने ये भी एक्नॉलेज नहीं किया कि इसमें भी उनका ये जो उनको ये जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया उसमें कोर्ट का भी उतना ही हाथ था. राइट. उतना ही हाथ था. विश circumstance to which the court itself was a party. Okay. So become a party of something is basically उसमें उस चीज में उनका हाथ होना. Okay. On the eve of the flow test, a Supreme Court again ये सब आप स्किम कर सकते हैं. On the eve of the flow test, the Supreme Court bench allowed it to go on. और जिस दिन ये फ्लो टेस्ट था, फ्लो टेस्ट के लिए बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट के सारे बेंच अलाउ कर दिए फॉर इट टू गो ऑन. Earlier, by an interim order, the court had extended the time given to then rebel Shiv Sena MLAs led by Eknath Shinde from June 27th to July 12th to reply to applications seeking their disqualification for defection. Okay. So उससे पहले क्या हुआ यहाँ पर, earlier by an interim order. Okay. Nishita, hello. What are you doing so late? Yes, Nishita, आप visible हो. On the eve of the floor test, a Supreme Court bench अलाउ कर दिया. अर्लियर एक कोर्ट ऑर्डर आया था, एक्सटेंडेड द टाइम गिवन, और इसने क्या किया, रिबेल शिवसेना जो थी उनके एमएलए एकनाथ शिंदे को 27 से
12 जून का एक्सटेंशन पीरियड दे दिया कि आपको डिस्क्वालिफिकेशन जो आप सीख कर रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको 12 जुलाई तक टाइम मिलता है, ठीक है। द ऑर्डर गेव एम्पल टाइम टू द डिसिडेंट, तो ऑर्डर ने क्या किया, बहुत सारा टाइम दे दिया। अगेन दिस इज द ऑथर इज कमिंग टू द कंक्लूजन कि उन्होंने बहुत सारा टाइम दे दिया डिसिडेंट को अलोंग विद द बीजेपी टू एग्जीक्यूट पॉलिटिकल मनूवर्स विदाउट द थ्रेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द हाउस। तो इस वजह से ये जो एक्शन था सुप्रीम कोर्ट का, इसके वजह से क्या हो गया, बीजेपी और अदर पार्टीज को जो बाकी पार्टीज थी उनको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल गया अपना पॉलिटिकल ट्रिक्स और स्किल्स अपनाने का, विदाउट द थ्रेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द हाउस। उनको कोई थ्रेट ही नहीं था डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द हाउस, क्योंकि दे वर द ओनली पार्टी। ओके, इन इफेक्ट द कोर्ट ऑर्डर्स हेल्प्ड इन इफेक्ट, और इसका इफेक्ट क्या हुआ, कोर्ट ऑर्डर ने फाइनली, ऑथर ये क्यों बता रहा है, कंक्लूजन बता रहा है कि इन दो कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से पूरा का पूरा रिजीम गिर गया। अ फैक्ट दैट हैड अ फाइनल वर्डिक्ट फेल्स टू एक्नॉलेज, और यही फैक्ट फाइनल वर्डिक्ट जो है वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। ओके, acknowledge नहीं कर रहा है, that's what the author is saying. Okay, so the Thackeray faction lost in number game, a game in which time is of the essence for both rulers who need to protect their flock and dissidents who need to rope in enough defectors. Okay, तो ये जो पूरा केस है ये नंबर का गेम है, और यही गेम ये एक ऐसा गेम है जिसमें टाइम बहुत वैल्यूएबल चीज है अपने फ्लॉक को बचाने के लिए, कि प्रोटेक्ट करने के लिए, कि अभी भी रूलिंग पार्टी में रहने के लिए, और जो नहीं, जो हटाना चाह रहे हैं वो गवर्नमेंट को, और डिफेक्ट करना चाह रहे हैं किसी पार्टी को। सो ये एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल गया उनको, और क्योंकि ये गेम नंबर का है, और में नंबर का गेम है, और इसमें टाइम बहुत वैल्यूएबल चीज है। ओके, सो दैट्स व्हाई द ऑथर इज सेइंग कि, और इसमें द ठाकरे फैक्शन लॉस्ट, बिसाइड cautioning governors against treating internal problems of a ruling party as a possible loss of majority. The court has also clarified that whips and leaders of the party in the House ought to be appointed by political party and not the legislator party. तो ये और एक एडिशनल फैक्टर ऑथर बता रहा है कि एक तो उन्होंने गवर्नर को क्वेश्चन कर दिया, ओके, क्वेश्चन कर दिया कि अगेंस्ट किस चीज का, ट्रीटिंग इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ अ रूलिंग पार्टी एज पॉसिबल, एज अ पॉसिबल लॉस ऑफ मेजोरिटी। उन्होंने क्या गवर्नर को क्वेश्चन कर दिया कि अगर अगर इंटरनल प्रॉब्लम्स हो रहा है तो उसका उसका क्या पॉसिबिलिटी है कि वो उनके पास मेजोरिटी नहीं है। द कोर्ट ऑल्सो, और इसके साथ और क्या क्लैरिफाई कर दिया कि जितने भी लीडर्स और उनके अंदर में जो मिनिस्टर्स हैं ऑफ द पार्टी इन द हाउस ought to be appointed by political party, political party से अपॉइंट होगी, लेजिस्लेचर पार्टी से नहीं अपॉइंट होगी। दिस हैज अ बेयरिंग ऑन, और ये जो फैक्टर है, अगेन दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, दिस हैज अ बेयरिंग ऑन whose whip is bending on legislators in the event of a party splitting into two factions। और इस चीज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किस चीज पे है, अगर एक लेजिस्लेचर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, अगर कोई एक ऐसा इवेंट आता है जिसमें पार्टी दो फैक्शंस में, दो सेपरेट ग्रुप्स में बन जा रही है, तो इस अनाउंसमेंट का, इस जो रूलिंग है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। ओके, इट it has also decided that the judgment in Nabam Rebia to 2016 holding that a speaker holding that the speaker who is facing a notice for a removal from office should not adjudicate a disqualification matter under the anti-defection law should be reconsidered by a larger bench। और ये वाला जो रूलिंग दिया है इसको भी रिकंसिडर करना चाहिए एक लार्जर बेंच के साथ। सो बेसिकली ऑथर को बहुत सारा प्रॉब्लम है। ओके, सो ऑथर अपने प्रॉब्लम्स बता रहा है कि ये चीजें हैं जिसकी वजह से द होल थिंग इज अ मेस। ओके, ये महाराष्ट्र में जो मेस हुआ है, these are the reasons, these are the factors। okay, अब यहाँ पर दिस वन इज नॉट अ प्रॉब्लम, बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि ये भी डिसीजन लिया है। ओके, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम दैट द ऑथर इज पॉइंटिंग आउट, ऑथर ये बता रहा है कि ये भी डिसीजन लिया है। इट इज ऑल्सो डिसाइडेड दैट द जजमेंट इन नपम रिबिया होल्डिंग दैट अ स्पीकर
हु इज फेसिंग नोटिस, अगर कोई एक ऐसा स्पीकर है जिसको हु इज फेसिंग अ नोटिस ऑफ रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस, उनको ऑफिस से हटाया जा रहा है, शुड नॉट एडजुडिकेट, वो कोई भी लीगल मैटर्स में डिसीजन नहीं ले सकते हैं, और स्पेशली डिस्क्वालिफिकेशन मैटर में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन से लॉ के अंडर में? एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में, एंड शुड बी रिकंसिडर्ड बाय अ लार्जर बेंच। और दिस इज समथिंग दैट दे हैव डिसाइडेड कि ये वाला जो फैक्टर है ये लार्जर बेंच से रिकंसिडर होना चाहिए। अब इसको बोल रहा है दिस इज वेलकम एज अ लेजिस्लेटर who have incurred disqualification should not be allowed to use a frivolous petition to remove the speaker to ward off their disqualification। ये वाला डिसीजन सही था, ऑथर बोल रहे हैं ये वाला जो डिसीजन बोला ये सही था। ओके क्योंकि कोई भी ऐसे अगर कोई एक ऐसा ऑफिसर है, सॉरी एक ऐसा कोई लेजिस्लेटर है जो डिस्क्वालिफिकेशन का चार्ज फेस कर रहा है, उसको कोई भी मैटर में, कोई भी पेटिशन में उसको नहीं घुसने देना चाहिए, ये सही है। ओके, मिस्टर ठाकरे कैन now claim a moral victory, but in domain of political collision a legislative majority is seen as more important than morality। so author finally क्या बोलता है कि मिस्टर ठाकरे क्लेम कर सकते हैं अपना विक्ट्री किस चीज पे? मॉरली वो जीत गए, ठीक है, मॉरली वो जीत गए क्योंकि उन्होंने क्विट कर दिया कि नहीं मैं फ्लो टेस्ट नहीं दूंगा, और मॉरली वो जीत गए। लेकिन अगर पॉलिटिकल सिनेरियो के पॉलिटिकल भिड़न के केस में देखा जाए तो लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी जो होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट देखी जाती है मोरालिटी से। एंड दिस वाज द एंड ऑफ द टुडेज एडिटोरियल। नाउ व्हाट वुड बी द टोन? बहुत ही फैंटास्टिक और डिफिकल्ट एडिटोरियल था आज का। व्हाट वुड बी द टोन ऑफ द ऑथर? क्या मुझे कोई बता सकता है? विशु गुड जॉब, आप आ गए। हर्षित हाय हेलो। व्हाट वुड बी द टोन? ओके, इट कैन बी कॉस्टिक नहीं कहेंगे, क्रिटिकल कहेंगे। ओके, कॉस्टिक वुड बी that the author has used any words that shows aggression, लेकिन ऑथर बार बार यही बोल रहा है कि ये लोग फेल कर रहे हैं एक्नॉलेज करने के लिए, फेल कर रहे हैं, पार्टी वाज पार्ट ऑफ इट लेकिन दे आर नॉट एक्नॉलेजिंग दिस थिंग। ओके, एंड यहाँ पर फाइनली एक डिसीजन को अच्छा भी बोला। ओके ये सो बेसिकली इस पूरे डिसीजन को क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है, या आप असर्टिव भी कह सकते हैं अगर आपको ये पॉजिटिव टोन में लेना है। ओके, विच इट इज मोस्टली नॉट, ठीक है, लेकिन ऑथर एक कॉन्फिडेंस के साथ, ओके दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन असर्टिव टोन, कि ऑथर कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि ये सारे जो आपने डिसीजन लिए ये गलत है, और ये जो डिसीजन लिया तो ये तो सही है। ओके सो all this, it can either be critical या assertive। Okay, so critical because the author is criticizing the Supreme Court। okay, Supreme Court's verdict कि आपने जो decision लिया है उसमें ये हुआ है, and also because the author is critically analyzing morality and majority वाला case, ठीक है, and क्या हुआ है इस case में। okay, so critical and assertive could be टू। एनालिटिकल भी एक्चुअली कह सकते हैं, बट बहुत स्ट्रॉन्ग है टू बी दैट न्यूट्रल। ओके, सो दैट्स व्हाई इट विल बी क्रिटिकल और असर्टिव। All right, so that is it for today, everyone. Thank you so much for joining the session. I will see you again at 4. The Warriors, be ready at 4 and 6 for the special session. Please do not forget to attend special sessions as well because they are special. All right, that is it for today. Thank you so much. Sayonara, everyone. Auf Wiedersehen. निशिता का करेक्ट हुआ। घर पे नहीं हूँ, ट्रैवलिंग। ओके निशिता, ऑल राइट। Nishita, criticism. Yes, critical. Very nice. Himan also critical. Nice. Thank you, Rahi. Au revoir.